Okay. Is it audible? Okay, I can, you know, it has to be audible cause I can see myself on the other platform और वहाँ पर आवाज़ आ रही है. Yes, so I think the voice is audible now. Zakirullah, check your mic as well cause I have just checked my mic and I can see on other platforms जहाँ पर voice is clear. So I'm sure it would be clear. Yes, अब आ गई, अब ठीक हो गई है. चलने जी, बहुत अच्छा हो गया, ठीक हो गई है. अब आप मुझे ये बताइए, व्हाट डू यू थिंक अबाउट टुडेज टॉपिक इट्स अबाउट डिफाइनिंग गोल्स. सो व्हाट डू यू थिंक? हर एक के देखें, कोई ना कोई तो गोल्स होंगे ज़िंदगी में. अब ऐसे तो नहीं है, इतनी उम्रें गुजार दी हैं और कोई गोल्स ही नहीं है. वेल यू नो दैट्स नॉट डेरोगेटरी कि भाई इतनी उम्रें गुजार दी और कोई गोल्स नहीं है. इट्स जस्ट दैट कि यू नो वी गो थ्रू डिफरेंट स्टेजेस और हमारे गोल्स होते हैं. व्हेन वी आर किड्स वी हैव डिफरेंट गोल्स. जब हम मैच्योर करते हैं वी हैव डिफरेंट गोल्स. और जब हमें ख़ास जो है उम्र गुजार चुके होते हैं तो देन हमारे गोल्स डिफरेंट हो जाते हैं. बट देन बिफोर यानी टू रीच ऑल दीज स्टेजेस देर आर यू नो प्रायोरिटीज़ आपकी डिफरेंट होती हैं. तो फिर आपके गोल्स उसी के मुताबिक होते हैं. फिर जैसे जैसे आपकी प्रायोरिटीज़ चेंज होती है, आपकी लाइफ चेंज होती है, तो आपके गोल्स डिफर करते हैं. So, what I intend to talk about is कि how can you make your goals and what are those things जो अगर आप जहन में रखें तो you'll be very clear about your goals. So this is what I want to talk about today, ताकि वो लोग जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं तो they should have this clarity कि भाई हमने अगर goals बनाने हैं या set करने हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार हो सकता है. And in the meantime, do pour in your suggestions, do pour in your comments, or do let me know कि आपके ज़िंदगी में क्या गोल्स है, आप क्या ज़िंदगी में करना चाहते हैं. सो यू कैन यू नो राइट इट इन दी इनबॉक्स ओवर हियर. तो मैं साथ के साथ आपके कमेंट्स भी पढ़ती रहूँगी. अच्छा, जब हम गोल्स की बात करते हैं ना, व्हेन वी टॉक अबाउट डिफाइनिंग गोल्स, तो देयर आर सर्टेन थिंग्स वी हैव टू कीप इन माइंड. सबसे पहली चीज़ जो आपने अपने माइंड में रखनी है, दैट इज़ यू नीड टू हैव अ पर्पस. और वो जो पर्पस है ना, उसमें क्लैरिटी होनी चाहिए. बिकॉज यू नो अगर आपके पर्पस जो भी है उसमें क्लैरिटी नहीं होगी तो यू वुड नेवर नो कि भाई हमने प्रोसीड किस तरह करना है. जिस तरह कोई भी बिल्डिंग होती है, हर बिल्डिंग की एक फाउंडेशन होती है. अब कोई भी बिल्डिंग हवा में तो नहीं खड़ी हो सकती. येस, एआई जनरेटेड बिल्डिंग्स हवा में खड़ी हो सकती हैं, बट वी आर टॉकिंग अबाउट रियल बिल्डिंग्स. सो जो रियल बिल्डिंग्स होती हैं वो ऑन ग्राउंड होती है, और ऑन ग्राउंड होने के लिए दे नीड टू हैव अ फाउंडेशन. सो फॉर दैट फाउंडेशन इन द सेम वे आपने जो है आपका जो पर्पस है उसमें भी क्लैरिटी होनी चाहिए. ओके, आई कैन सी समवन एट द टॉप ऑफ माय स्क्रीन. सो हुएवर दिस इज, वेलकम टू माय लाइव सेशन. और जाकिर, आप क्या कह रहे हैं? येस, आई हैव अ गोल टू गेट अ गवर्नमेंट जॉब बट स्ट्रगलिंग फॉर इट. Appeared in 12 interviews till now but luck is not favoring me. Okay, I'm sorry to hear about that, Zakir, but you know what, my humble opinion is that never give up, always be consistent. Or you know what, as far as government jobs are concerned, it's my personal opinion. I don't know what other people think about it. Though government jobs do have some perks and benefits, but in the longer run those people who are doing their own private businesses या कोई ना कोई जो है, they have started from somewhere on their own, those are the ones who are you know happy. So those people who are into government jobs, so far जितने लोगों को मैंने देखा है, I don't see them happy. Cause you know what, you need to have a certain mindset to be a government servant or to work for the government. So if you have that mindset, तो then you are more than welcome to you know, अभी आपने 12 इंटरव्यूज़ दिए हैं, then you can keep on giving or taking different interviews, giving in fact, अगर आपने appear होना है. तो it totally depends आपका क्या mindset है. So I always talk about myself. So मैं तो आपको अपनी एग्जाम्पल ही दे सकती हूँ कि I don't have a mindset of serving people, क्योंकि I think this bureaucracy और ये जो सारा सिस्टम है सिविल सर्विस का, it was you know ये हमारे ऊपर जो है थोपा गया था. सो इट्स नॉट आवर ओन सिविल सर्विस. तो ये वो थोपी सर्विस है. और जो
ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो उसी के मुताबिक चल रही हैं. सो इफ़ यू वांट टू डू समथिंग इन लाइफ एंड इफ़ यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट एंड इफ़ यू वांट टू अर्न, तो यू हैव टू लुक आउट ऑफ द बॉक्स एंड देन फाइंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर योर सेल्फ. चाहे आप जो है फ्रीलांसिंग करें, चाहे आप जो है अपना कोई छोटा सेटअप बना लें, एंड देन यू कीप ऑन, या आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें एंड यू कीप ऑन लर्निंग डिफरेंट स्किल्स एंड इम्पार्टिंग दो स्किल्स एंड यू earn your रोजगार through those skills. So that is how you will be fortunate. And maybe you're looking in the wrong direction. Zakirullah, I think you're an MPhil. So I would always suggest कि भाई आप इतने advanced degree आपने ली हुई है, then you shouldn't go for these mediocre jobs unless and until you have a mindset of serving people. So I hope मेरे जवाब में भी आपको अपना आंसर मिल गया होगा. But anyway, let's get back to our topic. So आपको जो है when you're defining your goals, you need to have clarity. आपका जो purpose है उसमें clarity होनी चाहिए. मोहम्मद हसन, thank you so much for joining and watching. अब clarity और purpose किस तरह हो सकता है? Like see, अगर आप ये कहें कि भाई you take a student who has to pass an exam. So अगर जो है वो एग्ज़ाम जो पास करना है, अगर स्टूडेंट के जो है क्लैरिटी नहीं होगी, पर्पस तो उसका है कि मैंने एग्ज़ाम पास करना है, पर क्लैरिटी भी तो चाहिए ना, वो एग्ज़ाम किस तरह पास करना है, उसके लिए किस तरह स्टडी करनी है, उसके लिए कितनी जो है मेहनत रिक्वायर्ड है, क्या प्रॉस एंड कॉन्स है स्टडी ना करने के. स्टडी करने के तो ऑब्वियसली हमेशा प्रॉस ही होते, नुकसानात नहीं होते, क्योंकि जो गोल होता है दैट गोल इज़ वेल इस्टेब्लिश. एवरीवन वांट्स टू गेट गुड मार्क्स एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम. सो फॉर दैट रीज़न अगर स्टूडेंट है एंड द स्टूडेंट वांट्स टू पास द एग्ज़ाम, तो उसका जो क्लैरिटी है, उसका जो पर्पस है, दैट्स वेरी क्लियर. सो सिमिलरली हर इंसान की ज़िंदगी के गोल्स होते हैं. इफ़ समवन वांट्स टू जॉइन सम सरकारी डिपार्टमेंट, तो देन आपने अपनी जो तमाम तर स्टडी है, तमाम तर फोकस है, वो उसके मुताबिक ही करना है. देयर वाज अ टाइम व्हेन यू हैड टू वर्क वेरी हार्ड, यू हैड टू छाले पड़ जाते थे. वो छाले वाली एग्जाम्पल तो आपने सुनी होगी ना. इतनी आपने जो है ना मेहनत आप करते थे. खैर आई वोंट से कि मेहनत अब कम हो गई है, बट नाउ देयर इज़ अ वे टू डू थिंग्स जो स्मार्ट वे होता है. सो इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग इन लाइफ, यू हैव टू चेंज योर स्ट्रैटेजी, यू हैव टू वर्क स्मार्ट. सो वो टाइम अब नहीं है कि भाई आप जो है ऑल द वे जो है सारे जो है तकलीफ बर्दाश्त करो, देन यू गेट दैट थिंग. सो आई वुड टॉक इन द टेक्नोलॉजी सेंस कि देयर वाज अ टाइम व्हेन राइटर्स हैड टू डू एवरीथिंग ऑन देयर ओन. दे वर यूजिंग देयर ब्रेन्स, और खैर ब्रेन्स तो अभी भी यूज़ करते हैं, बट नाउ विद टेक्नोलॉजी वी हैव सो मेनी सॉफ्टवेयर्स, और you can work smartly with the softwares. With AI you can work a lot and you can work in a smart way. और आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा जो है आपके पास, you have excessive time when you are using the AIs. So in the same way आप अगर जो है कोई चीज़ परस्यू करना चाह रहे हैं, तो you have to work smart. चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो एजुकेशन है, चाहे वो आपका कोई भी प्रोफेशन है. सो इफ़ यू आर वर्किंग स्मार्ट, तो फिर आपको जो है उस तरीके के जो है मसाइल पेश नहीं आएंगे. बट येस, इफ़ यू आर गोइंग थ्रू ऑल द मीन्स, जो यानी आप राइट फ्रॉम स्क्रैच जो है स्टार्ट कर रहे हैं, यू आर नॉट लुकिंग एट व्हाट पीपल हैव वेंट थ्रू. आप ये नहीं देख रहे कि आपके सामने एग्जांपल्स हैं, आपके पास लोगों की रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जिनसे आप फ़ायदा उठा सकते हैं. सो अगर आप जो है हर चीज़ अपने एंड पे खुद कर रहे होंगे, तो वहाँ पर आपको नुकसान भी होगा और आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, एंड दैट्स नॉट वर्किंग स्मार्टली, दैट्स रादर वर्किंग फुलिशली. सो नाउ द टाइम इज़ कि विद टेक्नोलॉजी आपने जो है स्मार्टली वर्क करना है, ना कि आपने वही लकीर का फ़कीर रहना है. सो दिस इज़ वन थिंग. अच्छा, सेकेंड चीज़ जो इसमें आ जाती है, लेट मी टेक सम मोर ओके. जाकिरुल्लाह आप कह रहे हैं थैंक्स अ लॉट फॉर द काइंड सजेशंस मैम, मोर पावर टू यू. ओके, थैंक यू सो मच जाकिर, more power to you too. So you just have to change your focus. You are looking in the wrong direction. You have many opportunities. आपकी सबसे बड़ी जो strength है, that is your MPhil. So pursue that MPhil, take it to the PhD level, and you can start with any business. You just have to look out of the box, और आपको चीज़ें आया होनी शुरू हो जाएंगी. अशोक कुमार, thank you so much for joining and watching. अच्छा, then आप
आपके एक और जो चीज़ आप कर सकते हैं व्हेन यू डिफाइनिंग योर गोल्स, दैट इज़ यू नीड टू सेट स्पेसिफिक एंड मेजरेबल गोल्स. अब goals, there can be many goals, and goals can be, long term and short term as well, but they have to be, you have to set specific goals. अगर आपका जो है मकसद ये है कि अगले 3 साल में I want to reach at this place, तो आपके जो गोल्स हैं वो भी उसी के मुताबिक they have to be specific, they have to be in a workable position, workable होने चाहिए, not workable position. क्योंकि जब workable in the sense कि आपने अपने आप को 3 साल की लिमिट दे दी, अब उस 3 साल में जो गोल्स हैं वो भी स्पेसिफिक हो, मेजरेबल हो, जिनको हम मेजर कर सके. अगर आप ये कहते हैं कि भी अगले 10 साल में जो है आई बी एट दिस प्लेस, तो उसमें जो आपके गोल्स हैं यू वोंट बी एबल टू मेजर देम. So this element of make them measurable, making yourself accountable for those goals, whether you'll be in that position to achieve those goals, तभी वो स्पेसिफिक हो पाएंगे और तभी वो अटेनेबल हो पाएंगे जब आप अपने आप को जो है मेजर कर सकते हैं. ओके, मोहम्मद हसन आप कह रहे हैं मुझे सच एन इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेक्टिव सेशन. थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट. इट ऑलवेज फील्स सो गुड जब आप लोग इंटरेक्ट कर रहे होते हैं एंड यू आर गिविंग सच लवली कॉम्प्लीमेंट्स. ओके, सो लेट मी जस्ट गो अहेड. और व्हाट, अगर हम जो है इसमें एग्जांपल्स जो है सोचें, तो मेरे जहन में तो जो एग्जांपल है ना वो ये आती है कि लाइक यू वांट टू रिड्यूस वेट. अब आप अगर ये कहेंगे कि भाई आई वांट टू बी हेल्दी इन द सेंस कि भाई आप हेल्दी खाएं और यू वांट टू लुक गुड, तो यू हैव टू स्पेसिफाई. नाउ दिस इज अ वेरी जनरल, आई वांट टू बी हेल्दी. भाई किसका दिल नहीं चाहता हेल्दी हो, कोई बीमार तो नहीं होना चाहेगा ना. बट हेल्दी जो है दिस इज अ जनरल टर्म. यू हैव टू स्पेसिफाई, यू हैव टू से कि भाई मेरे जो है ये गोल है, आई वांट टू अचीव this much weight, और उसके लिए what I am going to do is I am going to exercise 30 minutes a day, या I am going to walk for 30 minutes a day, and उसके साथ जो है ये मेरी जो है डाइट होगी, ये मेरी स्पेसिफिक डाइट होगी. सो यू हैव टू बी स्पेसिफिक. इन द सेम वे आपके जो गोल्स हैं वो भी स्पेसिफिक होने चाहिए, वो भी मेजरेबल होने चाहिए. अगर आप जो है अगर आप कहते हैं कि मैं भाई 30 मिनट हर रोज़ जो है वॉक करूँगी, तो वो स्पेसिफिक भी है, वो अटेनेबल भी है, क्योंकि आप ये कर सकते हैं. पर अगर आप ये कह देते हैं कि भी अगले 3 साल में मैं जो हूँ वॉक करती रहूँगी और फिर जो है मैं जो हूँ हेल्दी हो जाऊँगी और मैं जो हूँ अपना जो है ना आइडियल वेट अचीव कर लूँगी, सो दिस इज़ नॉट स्पेसिफिक, दिस इज़ नॉट अटेनेबल. क्योंकि यू डोंट नो अगले 3 साल में आपके साथ क्या होने वाला है, आपकी बॉडी कितनी डिग्रेड हो जाती है. एंड जो गोल है इट्स ऑल्सो नॉट मेजरेबल क्योंकि इट्स स्पेसिफिक. So you can put many things into that 3 साल. So you have to be specific. In the same way आपके जो goals हैं, goals भी specific होने चाहिए and they should be measurable. और आप जो अपने आप को account for कर सकते हैं. Like अगर मैं कहती हूँ कि भाई मैं हर रोज़ जो है 30 मिनट वॉक करती हूँ, तो मुझे पता है कि मैं उस 30 मिनट में वॉक करती हूँ और वो वॉक मेरे ऊपर क्या असर करती है और उसके जो है मुझे क्या फ़ायदे हो रहे हैं या उसके मुझे क्या नुकसानात हो रहे हैं और मेरी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करी है. सो आई नो दीज थिंग्स, सो आई कैन एडजस्ट दीज गोल्स कि ओके अगर 30 मिनट्स मुझे लगता है कि मेरी बॉडी के लिए ज़्यादा है तो आई कैन रिड्यूस इट, और उसको रिड्यूस करके मैं 15 मिनट्स की वॉक कर सकती हूँ और साथ में कोई एक्सरसाइज बीच में इंट्रोड्यूस कर सकती हूँ, या आई कैन चेंज द ओवरऑल सिनेरियो. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन मी फॉर द सिंपल रीज़न कि मैंने जो गोल्स सेट किए हैं दोज आर मेजरेबल, दोज आर अटेनेबल एंड आई कैन चेंज देम अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसेस, या जिस तरह मुझे सूट करते हैं. ओके, फिर इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, लेट मी सी इफ़ आई हैव मिस्ड एनी कमेंट. फिर इसमें एक और जो चीज़ आ जाती है, यू हैव टू ब्रेक गोल्स इनटू मैनेजेबल स्टेप्स. जैसा मैंने आपको बताया कि भाई आपने जो है ना स्पेसिफिक गोल्स रखने हैं विच आर मेजरेबल. इन द सेम वे आपके जो गोल्स हैं यू कैन ब्रेक देम एंड दे शुड बी मैनेजेबल एज वेल. और मैनेजेबल जो है किस तरीके से हो सकते हैं, लाइक मैं आपको जो हूँ ज़्यादातर डेली लाइफ की जो ऑर्डिनरी एग्जांपल्स होती हैं उससे जो है समझाने की कोशिश करती हूँ. बट देन देयर आर मेनी पीपल
जिनकी एग्जांपल्स भी मैं कोट कर सकती हूँ कि उन्होंने लाइफ किस तरह स्टार्ट की और उन्होंने कहाँ से स्टार्ट की और अब जो है वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं. लाइक अगर जो है मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट अमेज़ॉन. सो अगर अमेज़ॉन की जो है हिस्ट्री ट्रेस की जाए तो इन द स्टार्ट जो जेफ बेजोस था, जो फाउंडर हैं अमेज़ॉन के, इनिशियली व्हाट ही डिड, he started with a specific niche of selling books online. So Amazon basically उन्होंने बुक्स ऑनलाइन बेचने से स्टार्ट किया एंड देन जैसे जैसे जो है टाइम गुजरा ही एक्सपेंडेड इट इनटू अ होल न्यू कॉन्सेप्ट. लाइक नाउ इट्स अ प्लेटफॉर्म जहाँ पर मल्टीपल जो है ब्रांड्स एंड कैटेगरीज हैं जहाँ पर चीज़ें सेल आउट होती हैं एंड इट्स वन ऑफ दी जो है बिगेस्ट प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स. सो यू हैव टू सी कि भाई आपके जो गोल्स हैं, इफ़ दे आर, यू ब्रेक देम एंड यू कैन मैनेज देम. सो स्टार्ट में जो है इन द सेम वे व्हेन यू स्टार्टिंग अप, आपके जो गोल्स हैं दे शुड बी इन अ पोजीशन, जो भी आपके गोल्स हैं, कि यू आर एबल टू मैनेज देम. अगर आपसे लाइक यू सेल डिजिटल कोर्सेज ऑनलाइन, सो एट अ टाइम यू आर स्टार्टिंग विथ वन एसेट, ओके ठीक है, यू आर डूइंग दैट. बाज़ लोग जो है डिजिटल कोर्सेज जो है सेल करते हैं, बाज़ लोग वैसे कोर्सेज सेल करते हैं, बट देन यू हैव टू सी कि भाई आप उस टाइम में अगर आप एक चीज़ जो है एक कैटेगरी पिक करें और उसकी सेलिंग कर रही हैं तो हाउ सक्सेसफुल यू आर, नॉट हाउ सक्सेसफुल यू आर, हाउ यू आर एबल टू मैनेज योर टाइम. क्योंकि जो मैनेजमेंट ऑफ टाइम है दैट इज़ अ स्किल विच एवरी वन नीड्स टू लर्न. इस टाइम में तो जिस तरह हम देखते हैं कि बरकत तो हर चीज़ से ख़त्म हो रही है, तो टाइम से तो सबसे ज़्यादा बरकत ख़त्म हो रही है. तो आपने अपना टाइम मैनेज करना है और उस टाइम में यू हैव टू सी कि आप जो भी चीज़ पिकअप कर रहे हैं या जो कुछ भी अगर आप सेल करना चाहते हैं तो इट शुड बी मैनेजेबल. चाहे आप वन से स्टार्ट करें, इंस्टेड के आप जो है ये सोचेंगे ओके मैंने ई कॉमर्स के बिजनेस में आना है तो ये 10 कैटेगरीज है, ये 10 प्रोडक्ट्स हैं और इन सब प्रोडक्ट्स को मैंने सेल करना है. नतीजा क्या होगा? नतीजा इज़ गोइंग टू बी फेलियर. कॉज व्हेन यू आर स्टार्टिंग इट इज़ंट दैट कि आपको बिजनेस आता है. सो मोस्ट ऑफ द पीपल जो बिजनेस में होते हैं, इट्स नॉट दैट कि दे हैव ऑलरेडी डन बिजनेस. देयर आर मैनी पीपल हु आर गॉड गिफ्टेड और उनको जो है दे अंडरस्टैंड कि ओके दिस इज़ हाउ पीपल वर्क एंड दे आर एबल टू लॉन्च प्रोडक्ट्स और वो उनको सेल करने में कामयाब होते हैं. बट यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम वन. Always start small and then excel according to circumstances, according to आपको जितना जो है बेनिफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, फिर आप उसको एक्सटेंड करें. पर अगर आप स्टार्ट में जो है एक लाइक इट्स जस्ट लाइक कि भाई आप एक दुकान डाल के बैठ जाएं और उसमें आपने ढेरों ढेर सामान रखा हुआ है, पर अगर आपको जो है सेल ही नहीं करना आएगा, आपके पास सेलिंग की स्किल्स ही नहीं है, तो दुकान में क्या चल रहा है? दुकान में तो फेल हो जाना है ना. दुकान आप डाल लें और साथ में उसमें बैठा किसी और को दें. सो वन ऑफ द insight tips for running a business is that always sit on the cash counter yourself rather than कि आप किसी और को उस कैश काउंटर पे बैठाएं. क्योंकि जब आप किसी और को बैठाएंगे तो जो एसोसिएशन और जो पैशन जो है आपका होगा शॉप में चीज़ें सेल करने का, इट माई द कैशियर जो जिसको भी आपने बैठाया है, if that cashier is not someone who you can trust in the long run, या even you can trust, is just some random guy, तो you can't trust कि भाई आपका business flourish करेगा. So business flourish करने के लिए you have to be the one who should be sitting at the cash counter, क्योंकि you will be exactly knowing कि आपको जो है दिन में कितना प्रॉफिट हुआ, कितना नुकसान हुआ, कितने कस्टमर आए, कितने नहीं आए, कौन सा प्रोडक्ट बिका, कौन सा नहीं बिका. सो दीज आर द थिंग्स जो कि आपने अपने जहन में रखनी होती हैं. एंड वेन एवर यू आर स्टार्टिंग विद अ प्रोडक्ट, you have to be aware if you are able to manage that product. Okay, I hope through this example आपको समझ आ गई होगी what I mean. Excel Brown, thank you so much for joining and watching. And I have Nizamuddin Jamtaro. Okay, thank you so much Nizam for your compliment. Okay, then this was another point. अब अगर हम मज़ीद पॉइंट्स की बात करें तो यू हैव टू सी कि आपके जो गोल्स हैं, आर योर गोल्स अलाइनिंग विद योर पर्सनल वैल्यूज़, क्योंकि दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके गोल्स नो व्हाट आर पर्सनल वैल्यूज़, हर एक की पर्सनल वैल्यूज़ डिफर करती हैं. नॉट एवरी वन हैज़ द सेम पर्सनल वैल्यूज़. सम पीपल
compromise their personal values in order to achieve their goals. So ये वाला जो है, I don't have to get into details, but yes, वो लोग जो अपने जो है personal values को, अपनी ethics को, अपने जो है conventions को जो है compromise करते हैं, and they are just after the goals. They do get benefit for a short term but not for a long term, क्योंकि यू नो हर इंसान में जो है कॉन्शियस होता है, और वो कॉन्शियस जो है कभी ना कभी जो है मलामत लाजमी करता है. सो इंस्टेड ऑफ compromising your personal values and going after your goals without those values, so you should always keep your personal values and your goals aligned. So जब ये align होंगे तो you will achieve success automatically, and the real success and the kind of success जिससे आपको खुशी भी मिलेगी. But if you compromise your values at the hands of goals just to achieve your goals, in the long run you won't feel comfortable. You will always have this thing called your conscience. It's not going to be at peace, and you'll always be in some kind of anxiety, and there are so many things it's associated with when you compromise your personal values for um, for goals which do not align. Okay, so अगर हम जो है aligning goals की बात करें तो like I would like to take the example of family. अगर हम family को देखें तो family जो है it's a core part of everyone, and those people who prioritize their families, तो वो क्या करेंगे, they will always make time for their family. So even if they have a very busy routine, they would still give one proper hour. अगर किसी के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, but still वो जो है ना टाइम जो है निकालेंगे अपनी फैमिली के लिए, and they'll be with their family. चाहे it can be just one meal they are having with the family, but they will have time for that. So आपके जो goals है, you have to align your goals with your personal values. अच्छा, देन जो है इसमें मज़ीद जो है हम क्या ऐड कर सकते हैं, इसमें मज़ीद आई वुड से कि यू नीड टू विजुअलाइज सक्सेस. इफ़ यू सी योर सेल्फ एज अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या एज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, और मे बी एज अ सक्सेसफुल एजुकेशनिस्ट, यू नीड टू विजुअलाइज दैट सक्सेस. सो जब आप विजुअलाइज करते हैं तो चीज़ें जो होती हैं ना वो मैनिफेस्ट होती हैं. It's you would have heard this saying कि in fact it's not just a saying, it's something जो कि आप अपनी डेली लाइफ में अगर ऑब्जर्व भी करते हो. when you think positive, yes, ये चीज़ तो जो है ना मोस्टली आप में से लोगों ने ऑब्जर्व की होगी. when you think positive, तो आप देखेंगे आपके इर्द गिर्द भी जो लोग हैं जो आपके साथ आकर अटैच होंगे या जो आप से बात करेंगे, those people are going to be the ones who would have positive energies, and you'll pick up good vibes from them. But if you have a negative mindset and if you're always thinking bad about things, about situation, तो आपके साथ जो लोग आकर जो अटैच होंगे, they would have the same kind of tendencies and the same kind of vibes. So if you want to visualize success, so in the same way you need to think about and you need to analyze the lives of successful people, and you need to sit with people who in their own sphere are successful. Now again, for success it's not necessary कि किसी के पास ढेरों ढेर पैसे हों तो you say कि हाँ भाई ये बंदा सक्सेसफुल है या ये बंदी सक्सेसफुल है. Success in itself, it's it's kind of an element. So जिस तरीके से happiness है ना, happiness is something that is sprouting from within us. In the same way, success has many connotations. It emerges from various assets. You just have to observe, like a person who is generating positive vibes and giving out inspirations and positivity. So that person for me is also a successful person. So you need to visualize, you need to in fact sit with such people.
क्योंकि जब आप उनके साथ बैठेंगे ना तो उनकी कॉन्वर्सेशन का लेवल ही और हो जाएगा. Like I read about this thing when you sit with the right kind of people, या when you sit with the successful people, तो आपकी जो conversation है that's totally different. आप जो उन लोगों से पिक कर रहे होते हैं that is totally different. So if you want your life to be boosted, you need to sit with the right kind of people, जिनका right mindset हो, who impart positivity, who impart good things into your life, ताकि जो है जब आप वहाँ से उठें तो you too are motivated, even if you are dejected, even if you're demotivated, but there is something in those people which makes you to sit and listen to them what they are saying, and you take home many good things when you sit in their company. Okay, so this is about visualizing success, and then you have to be flexible, but you have to stay focused. Now being flexible का ये मतलब नहीं है कि भाई आप जो है ना totally सब चीज़ों को जो है ना sideline कर दें. Being flexible means कि whatever goals you have, उनमें कुछ लचक होनी चाहिए. So flexible is lachak in the sense flexibility here, but what I mean is that whatever goals you have, you should always leave some room for improvement, because rigidity, it does not help in the long run. So जिस तरीके से जो है हमारे जो goals हैं वो flexible होती हैं, there's room for improvement. In the same way, every person has room for improvement. So there is no one person जिसको मैं कहूँगी भी उसकी life जो है 100% है and they don't need to improve. Every one of us needs to improve somewhere. We are not experts. We are all in the learning and implementing phase, and we are all learning. हम सब जो है एक दूसरे से learn करते हैं. We all listen to what people have to say. We all listen to different suggestions, your feedbacks, your reviews, and whatever people are saying, we try to apply those things into our lives. Because what people are saying, there are many people who say things out of their experiences, और उनके जो experiences होते हैं, it's much more than the experience you have lived your whole life. So you need to listen to people. You need to see कि लोग क्या कह रहे हैं, instead of focusing on this. Okay, this person is younger than me, so ये मुझे क्या advice दे सकते हैं. Never think like that, because you will find the best of the best advices coming from people who might be very younger in age, who might be full of wisdom, and then there can be even very wisely people जिनसे आप जो है आपको अच्छे अच्छे जो है comments और feedbacks मिल सकते हैं. So you have to listen to everyone. So you need to have that aptitude and attitude of listening. So when you listen to people, you gain so much insight about yourself, about your work, about how you can transform yourself in the positive way. और जब आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आप ज़्यादा अच्छे तरीके से लोगों पे एक अच्छा इम्प्रिंट जो है छोड़ सकेंगे, and you'll be impacting their life in the most productive way. So you have to listen to what people say, not that who is saying what. Okay, so for that you have to stay flexible, but yet you have to be focused. Focus is going to be on your goals. Focus has to be कि भाई आपके जो goals हैं वो आपकी values के साथ align कर रहे हैं, but you have to keep in mind the suggestions given by the people, and you have to change according to that. So you have to be flexible. And then what else you can do? Okay, let me see आपके मज़ीद कोई कमेंट्स हैं. मोहम्मद हसन, यू आर सेइंग comprehensive and well defined session. Okay, thank you so much for your compliment. You always pouring so so good comments and compliments. Thank you so much. So you have to when you are setting your goals and when you're defining it, you need to progress. You need to track your progress. जो भी आपकी progress है आप उसको ट्रैक करें. एज आई सेड कि आपके जो गोल्स हैं दे हैव टू बी मेजरेबल, दे हैव टू बी स्पेसिफिक, एंड दे हैव टू बी अटेनेबल. सो इन द सेम वे व्हेन यू आर ट्रैकिंग एवरीथिंग, तो आप अपनी प्रोग्रेस भी ट्रैक करें. यू सी कि भाई आपने कहाँ से स्टार्ट किया था, व्हाट वाज योर जर्नी व्हेन यू स्टार्टेड, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वर व्हेन यू स्टार्टेड योर जर्नी. सो इफ आई ट्रेस माई जर्नी when I started this all, so it has been quite some years, but I can still feel, well, I won't say I'm an expert. I'm still learning and I still have to learn a lot. But yes, I am in that position to guide people well,
बिकॉज नाउ आई नो कि भाई ये जो सारी जर्नीज़ होती हैं, जो आपकी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नीज़ होती हैं, यू लर्न सो मच, यू कीप ऑन लर्निंग, you keep on progressing, and that's how you keep on guiding people, that's how you are mentoring different people who come along. There are Kyunki there are so many kind of people. Some people just come to see whether you're well versed or not. Other might just come to, take your guidance. And then there might be other people who might be just struggling as you were struggling in some stage of your life. So there are every kind of people. So जो भी आपके across आए, you need to you need to guide them. एंड जब आप अपनी जो है प्रोग्रेस जो है, जो सक्सेस है, या अपनी जो भी जो है गोल्स हैं, उनको जो है ट्रैक कर रहे होते हैं, तो यू आर इन दैट पोजिशन टू हेल्प अदर पीपल, बिकॉज एवरी वन in this life, yeah, everyone who you come across or those who come across you, we are all at different stages in our lives, and there's simply no comparison. Like I would never say कि भाई so and so is my competitor, because I don't have competition with anyone. I'm working on my own. I have my my own goals, and I have my own different things. So I don't have a comparison. In fact, I don't compare myself with anyone, because every one of us are doing things in our own sphere. We have different goals, but your focus should be on the long term, on the overall impact that's creating. So if my whatever I'm imparting, it's creating a positive impact on the overall society, that is my goal. कि whatever you are doing, you should be in that position कि you're giving back to the community, या आपके जो बातें हैं, या आप जो भी कर रहे हैं, जो भी impact आप create कर रहे हैं, whether you're transforming the minds of people, so it should be in the positive direction. चाहे आप एक small community को करें, या चाहे you are doing it globally, या whoever is coming across whatever session you are giving, so that should be positive. So that should be the end goal, not that you are comparing yourself with other people. Okay, this so and so is doing this and I'm doing this. No, there's no comparison. Okay, unless and until you are satisfied, और जिनके लिए आप ये सब काम कर रहे हैं वो satisfied हैं, तो that is sufficient for you. Okay, then one of the last points, it's that you need to be consistent. So ये जो consistency है ना, ये तो आप कोई भी काम कर लें. And when we talk about defining goals, consistency is the key to everything. Whatever you're doing, you should do it consistently. अब ये नहीं है कि आपने जो है एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया और आपने उसको जो है ना बीच में छोड़ दिया फॉर द रीज़न कि भाई आपसे नहीं हो रहा, तो then go and find people who were able to do that thing. Yeah, if you are stuck, then go and ask people. अभी अलमिया क्या है? अभी अलमिया ये है, people don't ask for help. So ये जो अलमिया है ना, कि I'm not going to ask anyone for help. You never know कि you just have to say it. Unless and until you say it कि I need help. And once you say it, so things become so easier. No one person can survive alone. We are all social animals. We can't live in isolation. We might do things at our own pace in a slow and gradual process, but ultimately we will reach that situation या reach that stage जहाँ पर हमें लोगों की ज़रूरत पड़ेगी. और उसमें कोई आर की बात नहीं है कि आप किसी से मदद मांग लो. I might do many things on my own, but then I'm not an expert in everything. Yeah, I am not I'm not a jack of all trades. I have to ask for help जहाँ पर where I feel क्योंकि भाई यहाँ पर मेरी weaknesses हैं, I don't have that kind of knowledge, or I don't have those particular skills to apply this thing onto whatever I'm doing. So I do ask for help. So जब आप help के लिए ask करते हैं, so there are many people who are already ready. Maybe they're dying to help you out, but you have to ask. So this is also one of the transformative phases जहाँ पर you have to train yourself. You have to learn to train yourself to ask for help, and it's
it's not nothing bad. So just come out of this thing of feeling embarrassed by asking someone to help you. It's not bad. You can always ask for help. So अशोक कुमार आप कह रहे हैं पर्सनल डिज़ायर फॉर रीचिंग a goal is powerful, but often other resources are needed as well: time, money, position, additional education. Ashok Kumar, there are certain things which you can just let go, cause you know what, you first of all you just have to have that mindset that I want to do this thing in life, and once you set that goal, things are streamlined. Like, even there are many times when you do not have the resources. I can give my own example. When I started out as a social media person, I did not have the resources, I did not have the relevant skills, but I had this burning desire of helping out. And that's something that comes with me. Like, I had this desire since my childhood that I want to help people, even though like back then I was dependent on my parents because I was a child. But I when you have a motivation, when you have a desire, when you have a passion, so things do streamline. You have a goal and you have your personal, you have your values. So you take your values and your goals aside with you. So when I grew up, I still had that desire of helping people, and I do help them in my own way. It's more of educational. What I can do is like imparting this knowledge to people, so those who are in need, they can drive motivation, or drive it helps them in different aspects of their life. So even if you do not have resources, when you start as a person who just gives and does not expect anything in return, so the return comes to you in many facets. So I do understand this thing that there are times when you want to do something and you do not have the resources. But what I believe is that you need to have a communion with your God. You don't need to have a communion with people. Your expectations has to, like, you have to depend on him, the creator. So when you have that, हम उसको कहते हैं, जब आपका तवक्कल होता है ना, खुदा से आपका तवक्कल होता है, तो आपको मिलता है. You don't have to look towards people. I know I have this skill, and I also know that I have my communion with Allah. So I'm just going to depend on that overall goal, and I'm going to just focus my attention on Allah. I'll pray to him and I'll get it. So you have to have that strong bond. अगर आपका बॉन्ड स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप जो है इसी तरीके से ना ज़िंदगी आपकी गुजर जाएगी, एंड यू विल से कि भाई रिसोर्सेज नहीं थे, एजुकेशन नहीं थी, ये नहीं था. सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट और saying things जो आपके पास नहीं है. Start with whatever you have. Everyone has a brain. Everyone has certain set of skills. Start utilizing those skills, and you'll see कि आप जहाँ रीच करना चाह रहे हैं और जिस टाइम में रीच करना चाह रहे हैं, तो आप बहुत तेज़ी से उस जगह पे रीच करेंगे. That is what I believe, and that is how I keep on moving in my life. And I do not think about these things कि भाई I don't have the resources. आपकी जो एजुकेशन है, आपका जो नॉलेज है, that is an asset, that is a resource. So if you start utilizing that resource, तो you'll automatically see कि भाई आपकी कितनी चीज़ें हैं जो वैसी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी. Zulkarnain Ali Haider, you are saying great topic and goal achieve target. Okay, thank you so much, Zulkarnain. I hope everyone's fine at your end. The other day you were telling me someone in your family had an accident, so I just hope everyone's well at the moment and they're recovering. So do pay my regards to those who were in an accident. Okay. So you know what, in the end I would say that whatever you are doing, you need to reevaluate your goals. You need to do certain things. If you find कि आपके जो goals है, you are not able to meet them,
then re-evaluate whether it's a measurable goal or it's not a measurable goal. So you have to do things, and you keep on evaluating, and then you need to put in certain accountability systems. क्योंकि अगर जो है, if you are not going to have accountability systems, तो आप अपनी प्रोग्रेस भी ट्रैक नहीं कर पाएंगे, एंड यू वुड नेवर नो उसका एंड रिजल्ट क्या होगा, कि भाई आपके अपने जो रिसोर्सेज होंगे या आप खुद जो है, जो सबसे बड़ा एसेट है, आप खुद घुल जाएंगे एंड यू वोंट बी एबल टू अचीव योर गोल्स. So you have to do things which are measurable, which are manageable, and you are in that position to have clarity. So whatever your goal is, अगर आपकी क्लैरिटी होगी तो आप ज़्यादा इजीली उनको अचीव कर सकेंगे, और अगर आपकी क्लैरिटी नहीं होगी तो you won't be able to achieve any goal. So this is all what I wanted to discuss today, and now if you have any comments और अगर कोई questions हैं तो you can let me know. और अगर आपको मेरा आज का सेशन जो है पसंद आया हो तो you can let me know through your emojis, and I can, okay, I just saw someone at the top of my screen. So you know, you can let me know about through the emojis whether you like this session or not. And if you liked my content, you can give me stars as well. That's one of the ways of Facebook. If someone likes your comment, so it's a way of, you know, monetization. So if you give me stars, तो वो automatically convert हो जाते हैं. Okay, so this is all regarding today's session. अब अगर किसी का कोई सवाल है, या अगर कोई at the top of my screen आना चाहता है, या कोई live आना चाहता है, तो you are more than welcome, and I'll take you live on camera. And I had someone, okay, Axel, do you want to come live on camera? So if you want to come live, I can, I need to see the green button of camera. So only then I can, you know, take you live. और अगर और भी किसी का जो है दिल है, या कोई जो है काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहा है लाइव आने की और नहीं आ पा रहा, तो तभी आप मेरी टॉप ऑफ द स्क्रीन पे आ जाएं, ताकि मैं आपको लाइव ले सकूं. और अगर किसी ने नहीं लाइव आना तो तब भी there's no issue. So you know, if there's no question from anyone, I can, you know, wind up the session and I can call it a day, and then I'll come live again, not tomorrow, day after tomorrow, inshallah. So I'll see you then. बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा, दवाओं में मुझे भी याद रखिएगा, और ख़ुद भी जो है ठंड से बचिएगा, क्योंकि it's very cold, and you know what, I'm keeping a hot water bottle with me, क्योंकि it's so cold. if I do not keep this hot water bottle, तो इस वक्त जो है ना मेरे दांत जो है बज रहे होंगे. Okay, I can see many people, and now I can see your emojis as well. So I'll see you day after tomorrow. Allah Hafiz. Bye bye.